Hello friends, what's up? In this video I'll show you how to make paneer with only 3 ingredients. Switch on the gas and turn the flame to medium. Take 2 liters of milk and boil it. Take a lemon and cut it into half and then squeeze the lemon into the milk. लेमन सीड्स को रिमूव कर दें अगर एक्सीडेंटली मिल्क में चले गए हैं तो. Stir the milk until the milk curdles. दूध को तब तक हिलाएं जब तक दूध फट ना जाए. इस टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें पनीर बनाने के लिए. Now take a strainer and put a clean cloth over it. एक छलनी लें और इसे साफ कपड़े से कवर कर दें. Now slowly pour the curdled milk over the strainer. फटे दूध को कपड़े की मदद से छान लें. Now pour the cold water over the milk solids to cool it down. फटे दूध पर ठंडा पानी डालकर उसे ठंडा कर लें. Remove the excess water from it and check the consistency. Your 3 ingredients paneer is ready in less than 3 minutes. आपका 3 इंग्रेडिएंट का पनीर तैयार है. You can use it for making variety of dishes like pizza, burger, sandwich, etc. Thank you so much for watching the video till the end. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. धन्यवाद.